Question number 4, we have to express in kilograms. First part, it's 200 grams. So I know 1 kilogram is equal to 1000 grams. I'm converting grams to kg. I will divide by 1000. The answer, yes, that's right, Tanvi, 0.200 kg, or you can simply write it as 0.2 kg. Both are correct. Yes, Rishit? Those who have forgotten, kindly note, हम convert कर रहे हैं grams को kg में. Smaller to bigger. We will have to divide. Second part, 3470 grams. Denominator 1000 and it will become kilograms. 3.470 kg. The zero from the last can be omitted. You can give the answer as 3.47. Yes, you may cut the last zeros. Third part, 4 kg, 8 grams. 4 kg, no change, 8 grams. Right, Gursimran. Let me see, Rishit, which part you are talking about? You can only cut zeros from the end, not from between. If you look at the first two parts and the last one, अगर आपके decimal number में last में zeros हैं, those can be cut. अगर zeros बीच में हैं, वो नहीं कटेंगी. Third part में जो zeros हैं, वो as it is रहेंगी. Yes. Okay, Gurshan? Okay, Gurshan Singh, I've noted down. Yes, Rishit, that's right. Then it's fine. Okay, Ananya. Okay, Tanvi. After this, question number 5 is about writing the expanded form.
I hope you have done. Anyone who's still on fourth question? Yes, Parth. Okay, Gurshan. Okay. I would advise you to turn your video off if you're using mobile data. Video off kar do. Okay, Gurshan. Okay, that's fine. Okay, Ananya, beta, I'm waiting for you. Hurry up. Question number 5th, we have to write down the expanded form for the decimal numbers. Expanded form of a decimal number. Yes, Parth? Okay. Question number 5, when you want to write down the expanded form of decimal numbers, the expanded form can be written in 2 ways. Kindly note, expanded form of a decimal number can be done in 2 ways. You can give fractional expansion, which is actually easier. I will write it as FE, and the other one is decimal expansion. As the name says, जैसे नेम है इनका, अगर मैं बोल रही हूँ फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, वो होगी विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस. अगर हम बोलेंगे decimal expansion, तो वो होगी with the help of decimals. I will do for one part and I think that should help you understand. Write down your decimal number. Indicate the places on the top of your number. This is tens place, this is hundreds place, point के right side पे. Have I written the places correctly? Point से left पे मेरे पास place आएगी ones with capital O, then tens with capital T. Small t means tenths, small h means hundredth. Now using this, I'm going to make my value for the whole part. 20 के लिए expansion बनेगी 20 plus 0. You can ignore 0 if you want. हम miss कर सकते हैं. अगर आप नहीं लिखना चाहते 0 मत लिखो. Then for portion after the point, point के बाद जो portion है, 0 place value will be 0. Yes, you can write. वैसे ओमिट कर सकते हैं, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती. 3 is at 100th place. 3 के नीचे लग जाएगा 100. This is fractional expansion. I'm just marking पहले 2 की वैल्यू, फिर 0, फिर ये वाला 0, फिर 3. हर डिजिट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्लेस वैल्यू बनेगी वो लिखनी है. 2 कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है, वो बन जाएगा 20. 0 जहां पे भी होगा वो 0 ही रहेगा. पॉइंट से पहले वाला 0 भी 0 बनेगा, पॉइंट के बाद वाला 0 भी 0 बनेगा. 3 जो है वो 100th प्लेस पे है. यस, यू कैन राइट इट एज 0/10, लेकिन वो 0 ही होगा. Now from here form decimal expansion. 20 as it is, 0 as it is. This 0, if you want, you can write it as 0.0 plus 0.03. Those who can write, they can write down the decimal expansion directly. Okay, Garish. Fractional expansion. First of all, write down the places. जो भी आपका डेसिमल नंबर है, डिजिट्स के ऊपर उनकी प्लेसेस इंडिकेट करो. पॉइंट के पहले 1 आएगा,
पॉइंट के बाद 10th 100th. Yes, Gunjan, I would advise that you write both. Yes, Samira, you can write 0.0 as simply 0. Jivitesh, I'm not understanding what you're asking. Gursimran, it's not important, but it helps you to write down the expansion correctly. I always take help of the places and then write down the expansion. So 2 as it is plus 0 over 10 plus 3 over 100. That's okay, Gursimran. अगर आपने directly लिखा है, wonderful. Sia, 2 I have written as 20 because 2 is at 10's place. जो भी आपका digit है, जिस place पे होगा, उससे multiply करना है. Yes, Damandeep, the way you've written is also right. Decimal expansion, 2 as it is. 0 can be written as 0 or you can write it as 0.0. 3 over 100, 0.03. Good. You can even skip writing down the place value for 0. Because 0 की जो value होगी वो 0 होगी, आप उसको miss भी कर सकते हो. Yes, Tanvi? I have, okay. Tanvi, go ahead and ask. You've raised your hand. You have a question? Yes, ma'am. Ma'am, actually, I have done question number 5 with the help of fraction expansion. Okay. Is it okay? Yes. Yes, but you should know how to write down the decimal expansion as well. आपने जो fractions बनाई हैं बस उनको decimals में convert कर दो. मैम ऑप्शन भी आ सकते हैं एग्जाम्स में. Yes, you could be given MCQ form. हो सकता है आपको पूछा जाए which of the following is the correct expansion of the decimal number. तो अगर आपको expansion वहां पे decimal form में दी है, you should be able to identify which is correct one. Okay, ma'am. That's fine. Thank okay? you. You're welcome. Let's write down the fractional expansion. I'm going to write down the places, ones, tens, 100 for the whole part. For the fractional part, tenths and hundreds. So 200 plus 0 plus 0. For the decimal part, 0 at tens place, 3 at hundreds place. Convert it into decimal form. 200 plus 0 plus 0 plus 0.0 plus 0.03. All those figures which are 0, they can be omitted. ये जो बीच में 0, 0, 0.0 है, इसको आप मिस भी कर सकते हो. That's completely fine, Rishit. Yes. Fourth part, we have 2.034. Very good. Manpreet, if you prefer,
ये आपकी प्रेफरेंस है, आप टेबल बना के फिर प्लेसेस लिखना चाहते हो या फिर डायरेक्टली लिखना चाहते हो. I would advise that you try to do it without the table. Do it directly. Identify the place of the digit and then write down the place value. Converting the fractions into decimals. Yes, Sia? Excuse me, ma'am. मैम थर्ड पार्ट मैम आपने कैसे बताया था कि पहले फर्स्ट पार्ट में कि हम टू मैम हमने 2 को 20 एज 20 लिखा था क्योंकि वो 10th की प्लेस में था. तो मैम हमने 100 और 200 लिखा, तो मैम 20 नहीं आएगा 10th की प्लेस पे. आइडेंटिफाई 2 कौन सी प्लेस पे है, देखो उसके ऊपर मैंने फिगर्स लिखी हुई हैं, प्लेसेस मैंने लिखी है ना. 2 के ऊपर कौन सी प्लेस आ रही है? यस 100 आ रही है ना. ओके मैम, तो मतलब कि वहाँ 0 है, इस कारण हमने 20 ने लिखा है, 0 ही लिखा. ओके मैम ओके. मनरीत? Ma'am, can we write like this? Place value of 2 is 1. You are mentioning the place. You have to write down place value. There is a difference. Place simply means वो कौन सी प्लेस पे है, उसमें आप बताओगे वो वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे है. ओनली द प्लेस. अगर बोल रहे हैं प्लेस वैल्यू, यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिजिट विद इट्स प्लेस. सपोज 200 वाली प्लेस पे है तो वैल्यू बनेगी 200. अगर 2 है वंस प्लेस पे तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, वैल्यू बनेगी 2. अनन्या? Ananya, you have raised your hand. If you have a question, unmute and ask. Tanvi? No, ma'am, I forgot to down my hand. Okay, it's okay. Okay. Anhad? मैम 7 क्वेश्चन मैम प्लीज हम We are almost there. We are almost there. I hope everyone has completed this question. Question number 5th. Decimal expansion. In 5th question, we have to write down. Sorry, this was the 5th question, decimal expansion. 6th one is where we want to write down the place value of 2 in the numbers given. All the parts given to you have 2 at different places. आपको आइडेंटिफाई करना है कि 2 कौन सी प्लेस पे है और आपको बताना है कि उससे उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी. यू कैन मेक अ नोट हियर अलोंग साइड. प्लेस वैल्यू जब भी आपने लिखनी है, place value of a digit is equal to the digit multiplied with its place. You can give your answer in words also. आप words में भी आंसर दे सकते हो और आप figures में भी आंसर दे सकते हो. First is 2.56. Since we are going to write down the place value of 2, 2 की place identify करो. 2 है आपके पास ones place पे. This is your answer. In second part, 2 is at tens place.
Angad Meet? Yes, ma'am. Beta, you have a question? Ma'am, in question number, ma'am, 5, ma'am, in fourth part, ma'am, 2.034. Ma'am, if on the place of 2, ma'am, there will be 0, ma'am, we will add 0 plus 0 over 10, 3 over 4, 3 over 100 and 4 over 1000, ma'am, this type. Yes. Okay, ma'am. Ma'am, done. Yes, Rishit? Ma'am, can we write the second step, that 2 into 10 equals to 20? Only this one. Yes. Okay, ma'am. Thanks. दमनदीप बेटा, आपने सिर्फ प्लेसेस लिखी हैं, आपको प्लेस वैल्यू बतानी है. You have to write down the digit along with the place. Right. Anyone who is on 6th question? If you have done all parts, let me know. Quickly send a message that you have done question 6th. Okay, done all parts. Okay. Let's thank you. Sumaira Preet, I don't understand which question, what you are asking. Please ask again. Okay. Let's take a look at 7th question. I'm going to turn to the textbook now. This is page 48 of the book. So this is a picture given here along with question number 7. They are saying Dinesh went from place A to place B and from there to place C. दिनेश कहां से स्टार्ट कर रहा है? फ्रॉम ए, वो जाता है पहले बी तक, फिर जा रहा है सी तक. दिस इज द पाथ विच दिनेश ट्रेवल्स. कहां से कहां जा रहा है? ए से शुरू करके बी तक गए, फिर बी से सी तक गए. ए टू बी टू सी. दिनेश ने ऐसे कवर किया है डिस्टेंस. द अदर पर्सन इज अयूब. अयूब स्टार्ट्स फ्रॉम ए, then he goes to D, from there he goes to C. तो अयूब भी यहीं से बिगिन कर रहा है, वो ऐसे जा रहा है. From A he goes to D and then he goes to C. दोनों एक ही प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं A से और आ रहे हैं C तक, लेकिन वो डिफरेंट रास्ते से आ रहे हैं. दिनेश घूम के आ रहा है B वाली साइड से और अयूब इधर से D वाली तरफ से जा रहा है. ऐसे
They are asking you to find out who traveled more and by how much. आपको बताना है कि दिनेश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अयूब ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों में से किसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया और कितना ज्यादा कवर किया. तो दिनेश का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन से चेक करो. यस गुरसिमरन, दैट्स राइट. आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो डिफरेंट प्लेसेस हैं उनके बीच में कितना कितना डिस्टेंस है. From the question, very carefully identify distance between A and B is 7.5. A और बीच के B और A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है? B और C के बीच में कितना डिस्टेंस है? Then the distance between A and C. Sorry, A and D, it is 9.3, and between C and D it's 11.8. ये इकट्ठा इधर आएगा अयूब का डिस्टेंस और ये वाला होगा दिनेश का डिस्टेंस. We will add the distances, correct हर्षीन? Yes, that's right भव्या. Okay, एक का आता है 21.2, एक का आता है 20.2. Okay, very good. Very good. Let's write down. We will write down a statement for the same question. हम statement बना के cover करेंगे इसका आंसर. First of all, for Dinesh, sorry, Anhad, unmute and ask. मैम फर्स्ट वाले बोला ना 20.2 है, मैं उसमें मैम 20.2 है, पर मैम जो दूसरे क्वेश्चन ने किया अयूब ने, उसने मैम 21.1 नहीं किया. We are calculating. Let's check. Let's see. 11.8. 21.2. Okay, I must have read that wrong because I did not calculate it. I was just reading the messages students are sending. So it's possible that they have calculated it wrong. Let's do it here and match your answer. This is the total for Ayub now. Start from the last figure. 21.1. Now let us find out who covered more. So we will compare Dinesh 20.2 kilometers and Ayub 21.1 kilometers. Who covered more? He is Anub. Ayub traveled more. You have to find out by how much. And for that, you will subtract, right?